All right, Ji, so this is the question we were attempting. In the last video, we were able to finish the knowledge understanding and analysis part of this question. जल्दी से एक दफा recap कर लेते हैं. Central banks can control money supply. हमने बता दिया how do they control the money supply. An increase in money supply will cause inflation. हमने ये भी बता दिया ADAS बना के. फिर हमने कहा therefore central banks can control inflation. हमने ये भी बता दिया through contractionary monetary policy. अब टाइम आ गया है क्रिटिक का. सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल मनी सप्लाई, देयरफॉर सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन. इन दोनों पे पहले कहते हैं, इस पे कमेंट करने लगा हूं. सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन. कैन दे कंट्रोल इन्फ्लेशन? Yes, they can, but there are problems with what? With contractionary monetary policies. And what are those problems? क्या मसले? ये हमने लिखे थे. लिक्विडिटी ट्रैप है, टाइम लैग है, कमर्शियल बैंक्स हो सकता है ना रिस्पॉन्ड करें, कंज्यूमर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या ख्याल है? बस इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जी यस. क्या बात कर रहे हो? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो सकती है? ये तो डिमांड साइड पॉलिसी है. परफेक्टली वेल, बिल्कुल ठीक आंसर. उसको भी लिख लेंगे. डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द. हाउ अबाउट वी लीव इट टू बल्कि एवेल्युएशन ही है, कंक्लूजन में क्या करना है लिखेंगे और टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पे डिपेंड करें. तो ये तो हमारे पास 6 सॉलिड पॉइंट हो गए है ना. शुरू करें फिर. और इसमें आ गया है लैग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन. बस इस लैपटॉप के थोड़े दिन रह गए, आखिरी सांसों पे. चलो भाई लिखें जी, फिर शुरू करें. हाउएवर क्यों लिख दिया हमने? हाउएवर contractionary monetary policy may fail to affect components of aggregate demand if the consumer and investor confidence is high. If such is the case, firms and private households may keep on borrowing even at high interest rates, hence AD may not fall and inflation will keep on rising. कैसा? सबसे आसान हमने सबसे पहले लिख दिया. बात समझ आई? अगली बात कर दें, कोई सॉलिड बात कर दें. The effectiveness of monetary policy also depends on interest elasticity of demand. If it is inelastic, raising the interest rate
may fail to fit consumption and investment. Raising the interest rate, raising the दो दफा लिख दिया ना, raising the interest rate may fail to affect consumption and investment. This is when banking sector is weak and economy relies on cash transactions. How commercial banks react to changes in to actions of the central bank also affects the effectiveness का कोई और उल्टा लफ्ज बताएं, synonym बताएं. Also affects the effectiveness का synonym. Efficiency, efficacy also affects the efficacy भी नहीं होगा वैसे. Efficacy. इम्पैक्ट लिख लें. Monetary policy. प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, पॉलिसी की क्या. अच्छा जी चलेंगे, जो भी है, इंग्लिश का नहीं है टेस्ट. हाउ कमर्शियल बैंक्स रिएक्ट टू एक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक आल्सो अफेक्ट्स द एफिकेसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. हाँ जी, किधर जा रहा हूं मैं, किधर जा रहा हूं, किस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, क्या कहने लगा हूं मैं. सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप. लिक्विडिटी ट्रैप याद है, बनाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ बोलना है कि किस तरह अफेक्ट करेगा. ठीक है. कमर्शियल बैंक्स expecting prices of bonds to fall may hesitate to buy them if the government wants to sell them to raise interest rates. Keynes called it the liquidity trap. Where interest rates become non-responsive, where interest rates become non-responsive to what? To changes in money supply. When initially the interest rates are already low.
क्या ख्याल है? The effectiveness of monetary policy to control inflation which is caused by supply side problems. Cost push inflation. The effectiveness of monetary policy to control inflation, which is caused by the supply side problems, is also less. Monetary policy is designed to affect aggregate demand and will not be able to control cost push inflation. हाँ जी, काफी क्रिटिसिज्म नहीं हो गया मॉनेटरी पॉलिसी पे, या कुछ और लिखना है? टाइम लैग भी हो जाए। मोर ओवर, changes in money supply and interest rates require time to be designed, implemented, and then affect aggregate demand, which further reduces inflationary pressures. कैसा आई बात समझ में? अच्छा, जब वो कह रहे कि मनी सप्लाई, उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? ऑल्टरनेट दें या ना दें? सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन, नहीं, ऑल्टरनेट देने की जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं है। क्यों? अगर तो वो कहता ना मॉनेटरी पॉलिसी इज अ गुड टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, देन वी वुड हैव गिवन एन ऑल्टरनेट। लेकिन इसमें ऑलरेडी इतनी ज्यादा बातें, आई बात समझ में? एज एन ये तो कंट्रोल इन्फ्लेशन है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी है। इधर तो मनी सप्लाई ऑलरेडी कम कर रहे हैं, वो हमने पहले दे चुके हैं। वो हम एनालिसिस में कल आप थी, एनालिसिस में बोल चुके मैं, व्हाट डू यू कॉल इट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर इक्वेशन, एमवी इज इक्वल्स टू पीटी, वो हम डाल चुके हैं, वो हम एनालिसिस में डाल चुके हैं। हाँ जी, अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म करते हैं। सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल मनी सप्लाई? नहीं, मनी सप्लाई और भी बहुत सारी चीजों से। ऑन द अदर हैंड, central banks may fail to control money supply as it is also affected by other variables. Other variables नहीं कहेंगे, also affected by
international trade and investments, along with the role of commercial banks through credit creation and credit multiplier. Commercial banks create credit and multiply it from the same deposits over and over. If the central bank fails to calculate it, which is difficult, they may fail to effectively control मनी सप्लाई. क्या ख्याल है? मनी मल्टीप्लायर भी हमने थोड़ा सा डाल दिया, क्रेडिट मल्टीप्लायर भी डाल दिया कि सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नहीं है जो कंट्रोल कर रहा है, उसके अलावा मनी मल्टीप्लायर भी है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड भी तो अफेक्ट कर रहे हैं. लोग जेब में डाल के पैसा अभी खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे. ईरानी क्या है, दिनार है ईरान की, क्या करेंसी है आजकल? 12 वो वॉर के चक्कर में लोग खरीद रहे हैं. ईरान 10,000 के 1 करोड़ आ रहे हैं ईरान की करेंसी, 10,000 रुपीज के 1 करोड़. वो जारी बात है वो डिवैल्यू हुई भी है, परचेजिंग पावर कम हुई है. तो वो चीजें भी तो ईरान की करेंसी को बेसिकली इफेक्ट कर रही है. एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल कॉज इन्फ्लेशन. हाँ जी, मनी सप्लाई अगर बढ़ती है तो हमेशा इन्फ्लेशन होती है? नहीं. किसने कहा? मनी सप्लाई बढ़ रही है लेकिन उसका ग्रोथ रेट जीडीपी से कम है, फिर नहीं होगी. मनी सप्लाई बढ़ रही है, एडी बढ़ रहा है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, फिर भी नहीं होगी. इकोनॉमी इस स्टेज पे है जिधर फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत दूर है, तब भी मनी सप्लाई का इंक्रीज इन्फ्लेशन कॉज नहीं करेगा. अगर इधर से आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगा रहे हैं, तब भी हो सकता है इन्फ्लेशन ना हो. 400 रीजन. अब इनको लिखते हैं और बस फिर कंक्लूड करते हैं, छुट्टी करते हैं. द स्टेटमेंट also asserts that an increase in money supply, always का लफ्ज यूज किया उसने, will cause inflation. An increase in money supply will cause inflation. However, that might not be the case if the growth rate of money supply is equal or less than the growth rate
of GDP. Furthermore, if aggregate demand increases due to an increase in money supply, however, it is matched by an equal increase in aggregate supply, for example, due to a rise in productivity or fall in direct taxes, then also it might not lead to inflation. Lastly, if the economy in the long run has a negative output gap, that is, the actual output is less than the potential output, then a rise in aggregate demand caused by an increase in money supply will not lead to inflation. To conclude, हाँ जी, conclusion दे दें. To conclude, this is more like a summary of whatever we have said. कितनी वैल्यूएशन लिख ली हमने? 1.5 पेज. ठीक है, perfect. और ओवरऑल कितने पेजेस हो गए? 4. परफेक्ट. ये हो सकता है 40 मिनट में, ये आराम से हो सकता है. थोड़ी सी बातें हमने थोड़ी सी ज्यादा कर दी, जज्बाती हो गए, लेकिन यू कैन डू इट. अच्छा जी, सेंट्रल बैंक्स कैन इंडीड कंट्रोल मनी सप्लाई. To conclude, central banks can indeed control money supply and hence reduce inflation. However, its effectiveness depends on various factors such as liquidity traps,
actions of commercial banks, how private households and firms perceive the changes and the cause of inflation. Money supply, along with supporting fiscal and monetary policy, is an effective tool to achieve macroeconomic goals such as reducing inflation. कैसा? हाँ जी, ठीक ही लिख लिया आंसर, गुजारा चल गया हमारा। अच्छा जी, जो एंड पे देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, एंड पे सारी समरी देख लें जी। ये चक्कर है, हमने कहानी कहाँ से शुरू की? वी स्टार्टेड ऑफ विद, पहली स्टेटमेंट को हमने देखा, सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल मनी सप्लाई, हमने बता दिया ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी सप्लाई, क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह बता दिया। फिर हम इधर आ गए, रिजर्व रेशो वगैरह भी बता दिया, ठीक है। फिर हमने मनी सप्लाई की डेफिनेशन हम भूल गए थे, जो कि हमें पहले करनी चाहिए थी, वो हमने दे दी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी, व्हाट डू यू कॉल इट, मनी सप्लाई की डेफिनेशन, ठीक है। रिजर्व रेशोज की बात हो गई, ये भी एक आ जाएगा। फिर हमने कहा कि मनी सप्लाई जब बढ़ती है तो वो कैसे इन्फ्लेशन को कॉज कर सकती है, उसका इफेक्ट दिखा दिया एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, ठीक है। फिर हमने वो उसको भी डिस्कस कर लिया, मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट को, एमवी इज इक्वल टू पीटी की बात कर ली। फिर हमने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह काम करती है, किस तरह यूज हो सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये ले लें देख लें, ठीक है। यहां पे आके हमारी खत्म हो गई क्या, एनालिसिस, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस। फिर हम इवैल्यूएशन पे आए, हमने पहले कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे फेल हो सकती है, ठीक है। ये सारी वही चल रही थी, काफी कुछ लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हमने कहा कि इन्फ्लेशन भी जरूरी नहीं है हमेशा हो, और फिर हमने आखिरी बात पे भी कमेंट कर दिया कि हाँ, वो ये इन्फ्लेशन वाली बात है कि इन्फ्लेशन जरूरी है। और एंड पे हमने एक फर्दर कमेंट दे दिया इसके ऊपर, ओवरऑल कंक्लूसिव रिमार्क। तो ये जनाब हमारा पूरा आंसर एक अच्छा सॉलिड तैयार हुआ है। थोड़ा सा जज्बाती हो गए, थोड़ा सा जरा ज्यादा लिख लिए, लेकिन चलें, एक आधा ग्राफ भी बना दिया। मार्क्स स्कीम में जो बकवास लिखी थी उससे 10,000 गुना बेहतर ही लिख लिया, ठीक है। चलें जी, व्हाट, 20 आउट ऑफ 20 तो नहीं, मैंने कभी जिंदगी में ना दिए, ना गोरा देता है, नहीं गोरा भी दे देता है, मैं नहीं देता। लेकिन दिस इज अ हाई स्कोरिंग, ये लेवल 3 है, मैं अपने आप को अब क्या ही बोल, लेकिन दे देते हैं, 11-12 आ ही जाने चाहिए। और इवेल्युएशन भी ठीक है, 4 दे देता हूँ मॉडेस्टी में, सिर्फ 16 आ जाने चाहिए, मैं उससे खुश हूँ। वैसे इससे ज्यादा ही आएंगे शायद। चलें जी, यहाँ पे लगती है आज की ब्रेक।